I Bamboo shoot, nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. For justice. Just what will we come across? These should be enough. Let's head back. Help! Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. चोर पकड़ी गई। बता जाओ। Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Greetings, everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the Traveler. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. I came through Stone Gate intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy. You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! You're welcome. Mmm, so tasty. If only there were more. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was going to run into you, I would have made a second batch. Hope you're taking notes, Traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling unlike these crisps.
But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Iridescence tour? The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Wow! Well, yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day, but then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Paimon would definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom, but more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music.
so I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue, so I followed their advice and made my way here. Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Jingsa Village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Don't worry, Yao-Yao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of Mora on several bottles of fine wine, which I left at the Statues of the Seven along the way. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Qixing know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. But you've already helped me so much. Well, I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? All right, well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone, please follow me. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job! Oh well, Paimon will just be a cheerleader instead. Dodge this! Oh, so sorry. That was Scatter! cool it! What's the hurry? There's no end to this. Freeze! That tingle? Propagate! What? Dodge this! Don't get frostbite. That tingle? Keep that! You're open. That tingle? That tingle? That tingle? Scatter! Cool it!
Empty chest. Good for storage. That was Dodge this! Ha! Ah! Ha! Ha! Ah! Wow. Liyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Well, we are here during Lantern Rite after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Hey, everyone! Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway?
Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? If we actually manage to make the Iridescence Tour Lantern Rite Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about the senior of yours Xinyan mentioned just now, is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. What's the hurry? This is a peaceful neighborhood. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the Lantern Rite, are we? You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival! Oh, an old Here you lady go. like me I packed wouldn't it all know into much a about bag that for sort you. of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting.
about that. You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. All into a bag for you. All into a Times bag for you. change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness All into a bag gracious! for you. You're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with, yes? Run along now. Don't let me hold you up. Thanks, Madam Ping. We'll see you All again into a soon. bag for you. All into a bag. Catch the wind. What's the hurry?
doesn't look good. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried GENSHIN leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, here you go. You'll end up falling asleep in the grass again. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Ah, Paimon will do the honors. What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? It's definitely an ambitious plan.
anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the taste of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. I will. Okay, I should be getting back. If Yo-Yo stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. Thank you, Yao Yao. Walk, talk, and act like me. It's just my deed today. Together sometime! Though the clouds may darken and might turn to gloom, still the moon over the chamber roams. I didn't know you were such a slacker.
Come on, let's get... We're not Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kuching. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. Yay! That's awesome! और हूता हो जाएगा मेरा हूता और शाम मेरे को निकल जाएगा उतना प्रीमो जब 1 महीने में 100 वेज तो कर ही लिया था मैं Please. शाव निकालूंगा शाव The Qixing have a निकालने के duty बाद to फिर deal हूता with matters निकालूंगा such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid supporter of all things new and innovative. As such, it is my privilege to पिछला work विश with you on मैंने this 100 exciting विशेस project. किए थे 100 Thank you so 100 much, का Kuching. पिटी था 100 का I'd become quite discouraged after our recent failures पूरा and क्या was बोलते हैं expecting लेकिन the same साला तभी outcome मेरे once को खाली again, कचिंग so मिली थी मेरे को I ये didn't dare to मिली get my नहीं hopes up. 100 विशेस Never करने in के my बाद भी wildest ज्यादा ही dreams किया could था I have 100 imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Right. Time for me to call in the performers. अब क्या To वो stage a क्या concert वो at a high-profile किस्मत event like खराब this is करके a रखा है rare opportunity. कुछ मिलने वाला We'll make नहीं sure it's a night to remember. Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. Oh, that. That can wait for another time. Oh. Ganyu? What's wrong? They told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an adeptus. What do you think? To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the adepti myself. I am part human and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? So it's not just artistic license? You bet they're real! Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to our network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case, 3 days. All right, I can work with that. If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people.
I'll feel much more at ease with your company. Of course. Okay, then let's meet back here in 3 days. Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom of this. You're all so helpful and kind. I just... पैसा चाहिए पैसा. Just हेल्प think, करने को पैसा. imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern rite a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too. I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Music sounds nice? Truth be told, the question of what music means to people is one that... Lady Yuhang? Baiwen, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. In that case, Yeah, Kuching, you're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, she will handle it. With the Traveler on the case, it's as good as dealt with. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. Will do! And say hi to Ningguang for us! you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. Let's revisit this question after the concert. The strange tune was coming from around here, right? But Paimon doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Yelan! How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack! You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. Fair enough.
Ah, you're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. Catch the wind. The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living here. The doors and the windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. This place is completely empty. There's nothing valuable left here at all. How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yelan, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well, Paimon gives up then. Paimon's got nothing. What about you? Give up as well? Yep. It's not obvious at first sight, that's for sure. To be honest, I was only able to put it all together because of some background knowledge about this area. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again, and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. Whew! That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat criminal. On any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, if we want to find the culprit, we just need to follow Yelan. Mm-hmm. As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. Freeze! Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Huh.
pace has increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. Again, and so close to Lantern Rite, too. 'Tis not the season for their antics. Come on, let's round 'em up. Hey! Who are you? Where did you come from? The evidence is conclusive. Okay, confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Really? You're open! Gotcha! Curses. Sounds like you're not all talk after all. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say! Please have... Tell us everything. You have one chance. And I'm warning you. Don't make... I won't, I swear! You know, so... Lantern Rite's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. Wow, you're really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay. Continue. I racked my brains trying to think of what I could do, and eventually I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did, and they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy, I couldn't resist. It was completely wrong of me, I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me make it right. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern Rite behind bars. Yes? Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am! You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean...
That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me, too. See you when I see you, and happy Lantern Rite. Yelan's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete! Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Right? How could anyone not be? When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. Paimon never imagined that music could be used to commit crimes. Oh, really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again! Well, anyway, now that everything's resolved, अरे राज भैया क्या हाल चाल है? Harbor. Paimon's still waiting for us with our random event rewards. क्या कर रहा है? खेल रहा कि नहीं? गेंशिन चालू किया मैं. Cryo is always far more effective in the rain. This is going to get interesting. अबे ये स्टोरी सुन के जो मेरे को नींद आ रहा है. मेरे को नहीं हो रहा रे भाई सही में. इन्हें बताता हूँ तेरे को. जिसका फोन स्लो है उसका हो रहा है. मेरा फोन भाई जैसे ही कर रहा हूँ वैसे ही गेट बंद हो जा रहा है. अरे यार पिज्जा वाला था बे. नेट ऑफ कर प्लंज के टाइम फिर और अंदर जाके ऑन कर दे. और आम कैरेक्टर यूज कर क्या पता हो जाए. Just sharpen my spear. गड़बड़ी हो जाएगा मेरे से.
जैसे ही ग्राउंड टच करे आगे स्प्रिंट कर। हाँ वो तो है। अरे बार बार मेरे से क्या फालतूगिरी हो रही है। No, I ruined everything. मरेगी, मुझे पता ही था मरेगी। देखा इतना फटाक से बन गया। तेरे से ज्यादा और परफॉर्मेंस किसी वाले बंदों ने किया। पता नहीं भाई क्या चल रहा है। साला मेरे से गड़बड़ी हो जाए ना बार बार। देख कैसी। अरे ये डायरेक्ट किधर आ रही है? एकदम फटाक से हो जा रहे थे। हाँ वही। भाग जाने दे। तेल लेने गया। मेरे पास बहुत मोर है। उसका मत यूज करो, वो स्टॉप लेती है ग्राउंड टच के बाद। That's great news. वो Please स्टॉप wait नहीं here a लेता। moment तूने if you कौन से would be so कैरेक्टर से kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. My greetings to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. The financing arrangements alone could well entail many rounds of कितना बड़ा क्वेश्चन है लैंटर्न राइट? Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead?
Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Ming Shao lantern at the docks when you arrived at the city? Yeah, it looked like a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal friend. अच्छा, कितना टाइम लगा था तेरे को करने में? On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wonder whether the melodies will be to their liking. Oh, they're gonna love them. I'm sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. और मेरे को I ये heard बता, that you'll be बहुत going on दिमाग a search खाते with हैं। Ganyu to find the मैं देखो descendants क्या of बोल रहा हूँ कि a क्या बोल रहे हैं कि fairy कौन सा lady कैरेक्टर from लूँ a मैं? Fontaine legend. ये बता। I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient... अब से कब तक और ऐसे सुनता बैठेगा तो और टाइम लगेगा बेंच। अच्छा है। ये क्या है बे? नहीं नहीं, अभी कैरेक्टर फ्री में मिलने वाला है ना। ये भाई ये कुछ है क्या? ये कैरेक्टर है क्या भाई? विजिलेंट ऑफ सी बिहाइंड द सीन्स। शोगन चली गई, मैं तो बोलूंगा तुझको छोड़ के सबके सब ले ले, जिसको देख रहा हूँ उसके पास है। अच्छा ये इवेंट है। शोगन चली गई, मैं तो बोलूंगा तुझको छोड़ के सबने ले लिया, जिसको देख रहा हूँ उसके। अरे भाई कितना देखना, मेरा पिटी देख यार, क्या बताऊं कितना पिटी है देख, मेरा दिमाग खराब हो गया। तू देख के पगला जाएगा, बोलेगा कि भाई इतना सारा। पच्चीस पेज पकड़ ले, 25 पेज कितना होता है? देख अभी। If my calculations are correct, Wanwen Bookhouse is due to receive a सबके पास। अबे लो, मैं देखा एक लो वाला बंदा भी था, वो भी उसके पास भी था भाई। किसको नहीं मिली है? क्या करने गए? सैड लाइफ बेटर नेक्स्ट ईयर, देखते हैं अब कब मिलेगा।
No, my sword! Dodge this! Cool it! Let me weave you a verse. Rain outlines your... This moment will be frozen in time. Dodge this! Witness the power of Gua! Oh, so sorry. At the front hand, it's nice and spicy. Get back!
What in the world do those symbols really mean? What in the world do those symbols really mean? The sound of the ocean waves. I keep watch. You leave, you call me. What in the world do those symbols really mean? What in the world do those symbols really mean?
हेलो आया का हस्बैंड, क्या हाल चाल है भाई? बड़े दिनों बाद कैसे चल रहा है पढ़ाई? एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक, आप बताओ। 10 बजे से फिर पढ़ना भी है भाई। मेरा तो अभी बहुत खराब हालत चल रहा है, सर्दी खांसी वासी सब। मेरे यार ये तो टीम प्लेयर वाला, मेरे को तो इसके अंदर खेल ही नहीं पाता। भाई कॉइन 0 कैसे हो गया? Touching shower lanterns that are different colors from the fireworks will damage the wearer. पहले बोलना।
हटा, मेरे को 0 कॉइन मिलने वाला है। वो घंटा भी मिलने वाला है। मेरा 0-0 हो गया भाई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर को दिखाया भाई, दिखाया। डॉक्टर को क्या खा, गर्म पानी पीने का, और कुछ नहीं। जिंदाबाद। 10 बजे से फिर पढ़ना है, लेकिन कितना है, 1.5 घंटे का ब्रेक लिया है क्या? अबे 12 का तो स्टडी बहुत ही हार्ड है यार, बहुत दोपहरी दास्ता है, क्या बताऊं। अच्छा तेरा पढ़ाई चल रहा है ना, इसके लिए तू स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा है अभी। के बाद कॉलेज की छुट्टी मिलेगी मस्त। अच्छा JEE भी तो है तेरा, वो भी बात है। टेस्ट ब्लाइंड 45 रोलिंग वेव, पता नहीं। घंटा मेरे को कलर तो समझता ही नहीं है। मैं दूर रहूंगा झाट लोग। लो एंड स्टडी विल बी बेस्ट। हम जितना होता है उतना करेंगे। बड़े कॉइन्स, बड़े कॉइन्स। थोड़ा बहुत वो मजा आएगा। पकड़ ले। ओ 116 मोस्ट चैलेंज कॉइन्स ऑब्टेन, टोटल चैलेंज कॉइन्स ऑब्टेन। कुछ तो मिला।
Tease me very good. देखा है जब तुझको है मतलब कंप्लीट हुआ एक और मैच Dimora 45 raising the skill. ये लोग के हाथ नहीं अटकेगा मैं अलग से लगा बड़ा हरामी आदमी उससे आपको से लेके जा रहा है क्या क्या करना पड़ता है भाई I smell rabbit.
Don't get frostbite. Out of the frying pan, into the fire! Rain Cutter, know my sword! Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. You're toast! Jab cross. Oh, so sorry. Cool it. Freeze. Suffocate. Body and mind. Rain outlines your fate. Rain Cutter. This moment will be frozen in time. Out of the frying pan, into the fire! Get them! No, my... Time to... Let me weave you a verse. Don't get frostbite.
Oh, so sorry. Nice and spicy. Eat this! Rain cutter! Don't get frostbite. Nice and spicy! Looking for trouble? Let me weave you a verse. No, my sword! Oh, so sorry. Following orders. Take off the jungle. Get back!
keep watch. You leave, you call me. Oh. आया का इतना पढ़ रहा है, टेस्ट खत्म नहीं हुआ, क्या पता, पूछा जब तक भाग ही गया हो। उसका तो एग्जाम चालू तेरे से पहले होगा वैसे। इसको JEE भी तो देना है। अरे यार ये फालतू हल्का सा हिल जाता है नाटक। बरोबर तो है, कहाँ कुछ हिला है। हाय वो जॉइंट की तैयारी कर रहा है। JEE जॉइंट। मैं 12 देख के 1 साल रुक जाएगा। अरे भाई वैसा नहीं करने का, 1 साल रुका मतलब 1 साल बर्बाद। जो भी करना है जल्दी करो। मेरे को तो लगता है 12 तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। 1 साल रुक के करेगा तू पहले क्या ये बता। जॉइंट क्या है, जॉइंट क्या है, जॉइंट JEE समझ आया। जॉइंट उनके तो JEE है ना। अच्छा मस्ती, मुझे लगा होगा कुछ जॉइंट होगा, होता होगा कुछ। अच्छा तू क्या करेगा, मस्ती भाई। बहुत वही जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा तुम लोग का जॉइंट होता है, हम लोग के इधर CET और IIT के लिए JEE मेन एडवांस जो भी है। क्या कर रहे हैं? JEE तो जॉइंट है। Hungry. Let's hunt. अच्छा मैं तो JEE बोलता हूँ, जॉइंट कभी हम मेरे इधर कभी सुना ही नहीं है। पहली बार तुम लोग से जॉइंट सुन रहा हूँ। मुझे लगा फूकने वाला जॉइंट होता है ना। बोला क्या चल रहा है भाई, फूको फाके क्या करने का भाई। गो टू चैलेंज किधर है? ब्रो क्या ब्रो। अब मेरे को जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बोलते होंगे, शायद सुना तो है कहीं, तेरे मुंह से ही सुना है मैंने। बोलते होंगे बहुत लोग, लेकिन हम लोग JEE बोलते हैं। मैं तो JEE बोलता हूँ, मैं जॉइंट वॉइंट नहीं फूकता। अरे जरा सा मिला नहीं ये अरे पीछे पड़ जाते हैं ये लोग।
लगता है ऐसे टमाटर की तरफ फुट जाते हैं लोग। तो देखिए Yeah. In the Radiant Sparks challenge, the less time taken and the more challenge coins collected, the higher your final score become. During the challenge, you can obtain the technique Sparkling Rush by collecting edges of spark. By unleashing Sparkling Rush, the character will dash towards collecting all coins nearby. Additionally, Sparkling Rush can pierce through the barrier of the obstruction food. Approach firework food should rapidly leap into the air using the firework power. Your wind glider will automatically deploy upon the reaching highest point. क्या कान खा रहे हो यार? Hilly चोल्स, सबसे छोटे चोल्स. कचिंग बिल्ड वैन. अभी तो मैं जंगलिंग बिल्ड कर रहा हूँ. कचिंग की अभी जरूरत पता नहीं लग नहीं रही मेरे को. अभी चौथा कैरेक्टर चाहिए रहेगा ना तो करता हूँ. अभी मेन वो है ना, पेपर नहीं है, क्या बोलते हो, पेजेस नहीं है, बुक. तो पहले जॉन्गलिंग और कचिन या फिर डायरेक्ट कोई नया कैरेक्टर बिल्ड करोगे. देख तेरे को दिखाई देता हूँ. ये देख, ये 80 कर लिया, ये 80 कर लिया, ठीक है. अभी मेरे को इसको 80 करने का है. इसको थोड़ा रोकूंगा. इसको 80 करने के लिए मैंने इसको असेंड कर दिया डायरेक्ट, ठीक है. इसको लेवल अप करने का है. हाँ, इसको असेंड करने बाकी. इसको सिर्फ मटेरियल चाहिए बस थोड़ा सा. तो अभी पहले ये करूँगा, उसके बाद कचिंग के पास जाऊँगा. 1 2 हो गया, ये 3 हो गया. इसको भी असेंड कर लिया. इसको लेवल अप करने का पेजेस ही नहीं है ना, पेजेस ही नहीं. इसके लिए मैं होल्ड पे रखूँगी जितना है उतना. तो अभी 70 पे लाकर छोड़ दूंगा. क्या मेन और वॉट, क्या तो सपोर्ट ही है ना. पहले मेन था मेरा, एक और ये दोनों मेन थे मेरे. ये दोनों से पूरा गेम खेलता था मैं. ये DPS किया. कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना मेरे पास ना इतना. तो अभी फिलहाल के लिए यही यूज कर रहा हूँ. टोटल 8 कैरेक्टर तो चाहिए ना कम से कम. हाँ लगता है, मैं बहुत लगता है भाई. क्या कितना लगता है मेरे को, बहुत लगता है. यू रेस्ट. अरे इसकी माँ का साकी नाक. अरे इधर नहीं जाना है भाई.
खैर कचिंग है, रेजर है, बेडू बिल्ड करके क्या करोगे? खैर कचिंग है, रेजर है, बेडो बिल्ड करके क्या करोगे? क्या लगता है? बेडो बेडो नहीं है, बेडो नहीं है। हाँ बेडो क्या करूंगा, बेडो तो जरूरत ही नहीं है ना, मेरे को 2 कैरेक्टर ही है, इतना ज्यादा कैरेक्टर क्या करूंगा? मिलेगी तब देखा जाएगा, तब मटेरियल सामान मान रहेगा तब देखा जाएगा फ्यूचर में। अभी फिलहाल जो है उसी से काम चलाते हैं। 8 कैरेक्टर टोटल बिल्ड करने का मेरे को। अच्छा फिर मेरे को उधर जाना पड़ेगा। क्या मिला वैसे? पूरा मिल गया। अभी इधर क्या करेगा? अरे यार ऐसी ऐसी जगह पे दे देते कि उधर चल के जाओ भाई, क्या गरीबी चालू है। कचिंग रेजर अभी देखना, सारे पूरी दुनिया को मिल गया, क्या बोलते हैं, ये मिल गया सारे जहाँ को ये मिल गया, क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है यार, रेडन। मेरे को घंटा कुछ मिला। फ्री कैरेक्टर कौन सा लोगे? इवेंट से एक फ्री कैरेक्टर मिलेगा। हाँ वही पूछने का मेरे को भाई, लू कौन सा? मैं तो पूछने पे लगाऊँ कि भाई लू कौन सा। मैं तो सबसे पूछ रहा हूँ भाई कैरेक्टर लू कौन सा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेना क्या चाहिए? कहाँ भाग गया वो? मैं कब से पूछ रहा हूँ लू क्या क्या लू। आपने तो रेडन पे सेव किया था। अरे रेडन पे सेव, रेडन तो पहले से, जब रेडन आई थी तभी तो मैं गेम चालू किया था, लेकिन घंटा कुछ मिला। चलो क्या करना है। अरे भोसड़ी का दबाया मैंने। आपने तो कॉन्स्टेलेशन के लिए जाओगे या न्यू कैरेक्टर? मेरे को नहीं पता, मेरे को कैरेक्टर देख ले, मेरा कैरेक्टर बहुत कम है, ठीक है? मेरा कैरेक्टर ही देख ले। कॉन्स्टेलेशन के लिए जाऊँ, किसके लिए जाऊँ, कौन कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है वैसे मेरे को वो भी याद नहीं है। क्या दिखा रहा है भाई? कॉन्स्टेलेशन मिला क्या मेरे को? देख मेरे पास यही कैरेक्टर है बस। पूजू सारा है तो अभी बफ के लिए है ही नहीं वो। तोमा है, ये है, अभी इतना सारा तो बिल्ड नहीं कर सकता। मेरे को शाओ जैसा एक शाओ तो चाहिए, वेंटी तरह तो मज़ा आ जाता, लेकिन शाओ का बिल्ड बहुत टफ है। मेरे को एक क्या बोलते ये चाहिए, एक शील्ड चाहिए और एक हीलर चाहिए। शील्ड और हीलर नहीं है मेरे को।
इतना लंबा दौड़ा के ले गए यार, फिर बाद में बोला कि भाई नहीं। कैरेक्टर कुछ खास है नहीं जिंगचो और शार्लिंग के अलावा। याओ याओ हीलर है। याओ याओ के ऊपर कॉन्स्टेलेशन लेना सही रहेगा। याओ याओ तो मिल ही जाएगा ना कैसे करके, बैनर में है ही है, मिल ही जाएगा, समझ रहा है। जिंगचो भी मिल ही जाएगा कैसे ना कैसे भी। डेंड्रो भी है, डैमेज देगा। हाँ वो तो है। डेंड्रो कैरेक्टर तो एज मैं ट्रैवलर को पहले ले रहा हूँ। डेंड्रो कैरेक्टर ट्रैवलर सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। तो वेट करो याओ मिलने का। डेंड्रो भी है, डैमेज देगा। अब याओ याओ को करूँ कि नहीं करूँ? हाँ याओ याओ तो ऐसे भी बैनर में ही है, मैं पुल करने ही वाला हूँ। कैसे ना कैसे मिलेगा, याओ याओ देगा ही वो। लेके मतलब क्या है, तो तू ये बता। और कौन सा तो लड़का कैरेक्टर है आइस वाला क्रायो, वो भी तो खास किसके कैरेक्टर पे जाओ, क्या जाओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं मिला तो याओ लेना, और अगर मिल गया तो जिंगचू कॉन्स्टेलेशन ले लेना। वैसे निंगोंग भी ले सकते हो। हाँ निंगोंग नहीं है मेरे पास। बहुत पब्लिक निंगोंग भी तो मिलती रहती है कि नहीं मिलती रहती है। इसका कॉन्स्टेलेशन ले लेता हूँ ना, जिंगचो का। अबे हाँ चोंगयोंग तो भूल ही गया, चोंगयोंग ले लो। अबे चोंगयोंग तो मैंने सुना कि रिकमेंड नहीं कर रही है पब्लिक। क्या है, शॉर्ट है कि क्या है वो? मेरे को एक बो कैरेक्टर अच्छा वाला चाहिए, बो कैरेक्टर, बो। अच्छा वाला बो कैरेक्टर। नंबर तो बकचोद है। कुजो सारा अच्छी वो कैरेक्टर है। कुजो सारा तो है मेरे पास ना ऑलरेडी। अच्छा, और रोजारिया कैसी है? कैरेक्टर बिल्ड करने में सारे फटती, एक तो दिमाग खराब हो गया। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कुछ कैरेक्टर बिल्ड कर लिए लेकिन उतना खास नहीं है। लो लेवल पे बिल्ड कर लिया तो कुछ फर्क नहीं।
तो इतना खा लेते हैं ना, क्या बता है। अबे ये भी अनलॉक कर दे यार, अनलॉक्स इन 4 आवर्स। अबे यार चलो इधर चलते हैं। सारिया तो स्पीयर यूज करती है, नहीं तो नहीं चाहिए। स्पीयर के लिए मेरे पास है, स्पीयर के लिए कितने कैरेक्टर है स्पीयर वाले ना, थोमा भी वही यूज करता है स्पीयर। रेडन से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा उसको मेरे को। कितनी बकचोदी होती है यार ये। अबे नाचम नाचम चाहिए क्या इधर? इवेंट पे कौन कौन से कैरेक्टर है दिखाना, ऐसा कैसे दिखाते हो? इवेंट तो प्रीमोजम 2400 मिलेगा भाई, जबरदस्त। ये क्या है? नॉर्थलैंडर कैसे पता चलेगा बे? अरे इधर भी है क्या? शाओ हुताओ भी स्पीयर यूजर है, फेस्टिव फीवर। अच्छा तो शाओ कैरेक्टर भी तो है ना भाई। रुक जा पहले पढ़ लेने दे। यू कैन यूज द लॉन्च ट्यूब टू इग्नाइट फायरवर्क, यू कैन परचेज द लॉन्च ट्यूब फ्रॉम ग्रैनी। क्या दिखाने का तेरे को? फर्स्ट वाला इसके अंदर ये सब है। यूंजिन का भी सुना था कि शायद अच्छी है कि पता नहीं कैसी है। शाओ का प्लंज अच्छा है, हुताओ का पता नहीं क्या अच्छा है। हुताओ बोल रहे कि हुताओ ले लो। फर्स्ट वाले पे क्या करना है, कैसे पता चलेगा? ये कैंसिल। Now, this is what I... फर्स्ट वाले पे क्या चाहिए तेरे को? अरे एक्विजिट नाइट पे फेस्टिव फीवर है। एक्विजिट नाइट चैलेंज से फेस्टिव फीवर किधर लिखा हुआ है? अच्छा इधर। अच्छा ये ऐसा बोलो ना भाई। याव याव है, जोंगलिंग है, बेडो है, ये ये तो चाहिए भी नहीं गलती से भी, ये भी नहीं चाहिए। यानफे कैसी है? यानफे को तो गाली दिया किसी ने, मेरे को सुना। ये बैनर में है, चलो 1 2 ये दोनों का कॉन्स्टिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। बेडो इलेक्ट्रो कैरेक्टर ऑलरेडी 2 कैरेक्टर है, जबरदस्त बिल्ड किया है, अभी नहीं चाहिए इलेक्ट्रो कैरेक्टर। और डीपीएस के लिए भी है मेरे पास। यानफे पायरो डीपीएस है। कैटलिस्ट यूजर और डीपीएस। ट्रायल वायल नहीं मिलेगा क्या? ये तो बकचोद लड़की है, ये नहीं चाहिए। ये चोंगेन का मेरे को पता नहीं। निंगुआन को तो यान पे अच्छा बिल्ड किया तो अच्छा डैमेज देगी। अच्छा अगर मेरे को ये क्या बोलते हैं, शाओ मिल गया ना, शाओ मिल गया तो मैं ना क्या करूंगा पता है, ये दोनों में से किसी का कॉन्स्टलेशन ट्राई करूंगा। ये दोनों में से किसी का कॉन्स्टलेशन ले लूंगा। पायरो में मेरे पास कैरेक्टर मेरे को बेनेट ही चाहिए, जो डीलोग वीलोग तो देने वाले ये लोग है नहीं।
पायरो का और एक तो ये कौन सा ये तूने बोला यहाँ पे कैटलिस्ट यूजर कैटलिस्ट चाहिए ही नहीं साला कैटलिस्ट दिमाग खराब करता है जितने भी है मेरे पास एक शेयर वाला तो है ही है इसका साला भाव भाव लेकिन कितना बिल्ड करेगा बिल्ड तो यही किया है मैंने फिलहाल के लिए सबको बिल्ड नहीं कर सकता भारी भारी कैरेक्टर 5 स्टार चाहिए मेरे को 4 स्टार में इतना मेहनत नहीं करने का मेरे को जब मिलेगा 5 स्टार तब बिल्ड करेंगे जब तक इसी पे चलाएंगे हाँ इसका इसका ही लेने का इसका क्या है दूसरा कॉन्स्टलेशन पे क्या है Call a moment of solitude. एक कॉन्स्टलेशन पे क्या इंक्रीजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेन स्वॉर्ड्स चलो ये भी अच्छा है और अगर स्ट्रॉन्गलिंग का क्या है क्रिस्पी आउटसाइड टेंडर इनसाइड ओपोनेंट्स हिट बाय गोबा अटैक्स नहीं चाहिए ये कॉन्स्टलेशन नहीं चाहिए यही ठीक है नंबर ऑफ स्पीयर्स बढ़ा देगा ना सही बोला जंक्शो का ले वो सही बोला वही सही है 2 से 3 हो जाएगा दो स्पीयर रहता है 2 से 3 स्पीयर रहता है शायद 4 हो जाएगा ना स्पीयर 3 रहता है कि 4 रहता है स्पीयर शायद 3 घूमता रहता है ना तो 3 से 4 होगा नहीं इसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहिए ड्यूरेशन बहुत कम है कितना बज रहा है अच्छा 2 या 3 देते हैं 4 तो नहीं देते मेरा तो C6 है 5 देता है भाई C6 है क्या बात है अच्छा तेरा C6 हो गया उसके बाद तेरे को अगर जिंगचो मिली तो फिर तेरे को उसके बदले क्या मिलेगा अगर बैनर पे तेरे को जिंगचो मिली तो कॉपी मिल गया तो कॉन्स्टलेशन कुछ बढ़ेगा कुछ मिलता है अगर जो नहीं चाहिए वो मिल गया C6 तेरा है ऑलरेडी तो तेरे को एक और बैनर पे मिल गया तो उसके बदले क्या मिलता है ऑब्वियसली 2 कैरेक्टर तो नहीं दे देंगे ना कि एक और C6 शो बनाओ पांच स्टार ग्लिटर मिलते हैं कुछ काम के 5 स्टार ग्लिटर 5 स्टार ग्लिटर से कुछ होगा मतलब एक एक्स्ट्रा विश देते अच्छा एक विश दे देते साला वो तो क्या बोलते घाटे का सौदा हुआ पता है वो एक एक्स्ट्रा विश उससे अच्छा वो कॉपी की जगह कुछ दूसरा कैरेक्टर का कॉपी दे दो क्योंकि वो एक्स्ट्रा विश में क्या मिलेगा क्या नहीं क्या पता एक बैनर तो मिला 4 स्टार एक विश होगा बस और कुछ नहीं वही चूतिया बनाते हैं लोग बड़े हरामी लोग हैं पब्लिक इतनी मेहनत से 160 प्रीमोजम जमा करती है और एक विश हाँ लॉस है लॉस एकदम लॉस है जिंगशो के बैनर पे कभी करो ही मत मतलब अगर तुम्हारा C6 है तो तो पूरा घाटे का सौदा है अरे भाई आया वॉशरूम से 1 मिनट भाई प्रीमो जब भर के दिया क्या The show's about to start. I know this story. Now, this is what I call a moment of solitude. Show's about to start. I know this story.
show's about to start. But why? I know this story. The show's about to start. स्पेसिफिक बैनर सिर्फ 5 स्टार के आते हैं। हाँ वो तो है, नहीं मतलब पीछे जो बैनर देता है उसकी बात कर रहा हूँ। I know this story. बैनर के साथ साथ पीछे भी कैरेक्टर लटक के आते हैं ना। लगता है 10 विश हो जाएगा। चलो विश मारते हैं। I know this story. Oh my goodness. Oh my gosh. Wow. अबे 960 क्या बोल रहे हैं? 10 विश खेलेगा and additional 6 intertwined faith are needed purchase with 960। हाँ मारना चल। गोल्डन दे दे। हा दे दे भाई दे दे। ये गोल्डन नहीं है ना? फोर स्टार में गोल्डन आता, पर्पल आता भाई। जल्दी बता दो, मैं इसको गाली ना दूं। एक और कैरेक्टर चाहिए मेरे को, दूसरा। एक और दे, दूसरा कैरेक्टर दे। कैरेक्टर दे, कैरेक्टर दे, मेरे को पता नहीं है तो कैरेक्टर दे। मिल गया। अरे स्ट्रीम देखो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार। कैरेक्टर मिल गया मेरे को, मिल गया मेरे को, 2 कैरेक्टर मिल गया, मजा आ गया। क्या बताओ। स्ट्रीम चालू करो जल्दी, तुम लोग मैसेज कर दो स्ट्रीम पे जल्दी है। जल्दी आओ स्ट्रीम पे। अरे वाह क्या बात है, 3 कैरेक्टर दे दिया। मतलब दुर्भाग्य खुल गए या भाग्य खुल गए, सॉरी गलत बोल दिया मैं। आप शाव बिल्ड करेंगे अपन? अब कुछ रखा ही जिंदगी में, कुछ नहीं। जो चाहिए था मिल गया, अब सेव करेंगे, है कि नहीं? बहुत 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 रुलाया है तूने। गेथिन वालों ने रेडर नहीं देके दिल तोड़ तोड़ के देखा तूने, देखा तूने? अरे देखा कि नहीं, पहले ये बता। बैनर देखा कि नहीं? देख। अरे सॉरी, गलत चीज दिखा रहा हिस्ट्री में। अरे यार पीछे जाना पड़ेगा क्या मेरे को? पीछे जाना पड़ेगा क्या? अभी का क्या पीछे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए?
अच्छा अपडेट बाद में होता है, रुक तेरे को वीडियो भेजता हूँ। वीडियो का अगर साइज छोटा रहेगा तो चले जाएगा, रुक। मतलब मजा आ गया, तू लेट आया, मैं तेरे लिए वेट किया। 2 मिनट का वीडियो बन गया क्या? 1 सेकंड। 70 MB जाएगा क्या? डाल के देखते, 70 MB जाएगा तो। मिल गया मेरे को, शाओ मिल गया। मेन बात वो है, शाओ मिल All गया। will be revealed in the next volume? अरे शाओ मिल गया, हाँ शाओ मिल गया, शाओ मिल गया, शाओ मिल गया। पीछे जाने की जरूरत नहीं, 3 कैरेक्टर मिला है एक साथ, 3 कैरेक्टर मिला है मेरे को। लेकिन कॉन्स्टेलेशन मिला है शिनियन का, Calculations are cool. शिनियन का कॉन्स्टेलेशन मिला है, कुछ मतलब नहीं है इसका। इसका कॉन्स्टेलेशन मिला है, ठीक है। कर अब बिल्ड बहन चुदा, अभी बैठ के करेंगे। अब शाओ किधर गया? ये देख, ये तो बहुत पहले से चाहिए था। और क्या चाहिए? और दूसरा ये मिली है मेरे को, यूजिन। यूजिन भी अच्छी है। यूजीन, यूजीन, यूजीन। इसको तो अभी एक वेपन देंगे पहले से। एंड स्विच को एक 4 स्टार का दे देते, ये दे दे फिलहाल के लिए, ये दे देते स्विच। बाकी वो दूसरा निकालेंगे तो दे देंगे। और फिर एट्रीब्यूट में जाके लेवल अप, इतना होता है लेवल अप मार देते। डिस्कॉर्ड आ जा कर, अब आ जाता हूँ, चलो डिस्कॉर्ड आता हूँ। ले आ गया डिस्कॉर्ड। This is it. Nothing. इतनी खुशी तो मेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिली। आवाज नहीं आ रही, कह रहे पान गुटखा खा के बैठा है। हेलो, मेरे को चेक करना पड़ेगा, कह रहे है तो। New power. देख तेरी आवाज नहीं आ रही मेरे को। कौन सा फ्लावर है? जिंचिंग, ये तो है, बहुत है वे, बना लेंगे। प्रीमो रेजिसिव। Wanwan Bookhouse is due to receive a batch of new releases today. Might we add a small detour to our adventure?
आया? हेलो। क्या बकचोदी पेल रहा है तू? हेलो। क्या है बे? क्या आ रहा जा रहा है तू? I know this story. अच्छा, पता है मैंने क्या कर दिया अभी? लेवल 50 हो भी गया मेरा। चाओ। हाँ, पहले से ही था मेरे पास मटेरियल। शाओ मिल गया। हाँ मिल गया अभी 10-20 पे। दिमाग खराब था मेरा, साला रेडन दिया नहीं मेरे को, साला गेंशिन वालों ने। होए वर्ष की माँ की आंख। अभी जस्ट मिला अभी। तू गया वैसी में, तू तू मुझे लगा तू है, तो मैं तू गया तो फिर मैं डायरेक्ट मैंने बोला रुक। स्ट्रीम देख रहा है क्या राज? क्या गुंड मोरा? कौन सा गोल्डन कॉइन पे? मोरा की बात कर रहे क्या? अच्छा जहाँ से वेपन ले सकते हैं शॉप। अच्छा क्या क्या चाहिए? स्टार ग्लिटर मास्टर लेस डस्ट और ये स्टार ग्लिटर। स्टार ग्लिटर तो तेरा है, ये तो बोला था बेनेट के लिए सेव करने के लिए। ये इसको सपोर्ट बहुत सारे चाहिए। ब्लैक की फूल दोगे? ब्लैक क्लिफ फूल दोगे? ये पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ ये R9 भी बोल रहा है कि ब्लैक क्लिफ पोल देगा, कुछ बोल रहा है। Time to act. अच्छा तो वो एनर्जी रिचार्ज वाला वो अच्छा नहीं है क्रिट? इसको मतलब दूसरा कोई वेपन, इसका सिग्नेचर वेपन कैसा है तूने बोला? अच्छा दूसरा वेपन नहीं है इसके अलावा? फिलहाल तो यही है 4 स्टार के वेपन। ऐसा कोई घाई नहीं है अभी अपने पास। रेजर जिंदाबाद है। शाह को आराम से बिल्ड करेंगे। मैं खाली उसको 50 पे करके रख दिया भाई, बस आराम से बिल्ड करेंगे। कोई घाई। अच्छा खुद की एचपी डिस्क। चार डोंट द एक्स्ट्रा किधर है? लाइफ ड्रेन 3% करंट एचपी 4 सेकेंड। कब तो 15 सेकंड तक 3% तक पेलता रहेगा।
अच्छा 10,000 लगाया तो हाँ 3 हाँ 10,000 का 3% 3,000। अरे चल ना कर कैरेक्टर कलेक्शन तो हो जाएगा मेरे पास। Body and mind. नहीं फारूजान नहीं है। Time to act. सुक्रोज भी नहीं है। Body and mind. एनिमो में यही अकेला और अपनी ट्रैवलर है। एनिमो में सायू है। अरे कोई नहीं, शाओ कलेक्शन के लिए हो गया ना कम से कम। हाँ उसको आराम से करेंगे, जंगलिंग को करेंगे अभी। तो 50 करके रख दिया मैं, वो करते रहेंगे। Rain outlines your fate. जिंको तो कर दिया 80। जंगलिंग को अरे बुक साला बुक का प्रॉब्लम है, वो बड़ा वाला बुक नहीं मिल रहा। इधर से अच्छा उसका कितना लगता है? तो लेलाइन से जाके फिर बुक भी फार्म करो बेंच से, क्या खरीद सब कुछ दो ना एक ही में। मेरे को भी अभी जरूरत फिलहाल तो नहीं पड़ी है बुक लाल वाला है, वो पर्पल वाला नहीं है। मैं अभी जोश में शाव पे डाल दिया 50। कल तो करना ही बाकी। अच्छा पतली वाली बुक बंद हो गई देना, पतली वाली नहीं मिलती है अब, वो मोटी वाली सब मिलती है, बड़ी वाली। खाना वाना करके क्या टहलने निकला है क्या? अरे अलहाइतम का मतलब सुना नहीं था अच्छा कैरेक्टर है कि नहीं, तो इसके लिए मैं अलहाइतम पे पुल ही नहीं किया। मैं अलहाइतम पे पुल इसलिए नहीं किया कि मतलब अरे ये भी है ना मेरे पास, ये देख यूजिन भी मिली ना, यूजिन मिली है। यूजिन क्या है, क्या कैरेक्टर है ये? हाँ ये सबको तो बिल्ड अभी कहाँ है, ये सबको तो कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर टच। मेरे पास अभी 2 5 स्टार कैरेक्टर हो गए, कचिंग और शाओ। कचिंग है ना मेरे पास। रेडन का लॉस, रेडन लॉस साला। तो अलहाइतम निकालना चाहिए कि शाओ ही निकालना चाहिए था? हाँ बोलते हैं खाली स्टाइल में अच्छा है, बाकी सब चूती है। अरे इसको वो भी दे सकते हैं ना, द कैच भी दे सकते हैं ना इसको। अच्छा अच्छा 1:2 का रेशियो बनाना ही पड़ेगा तभी डैमेज मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। No, my sword. अच्छा आराम से पहले ये लाइट है फायर आराम से करेंगे, कोई भाई नहीं है। मिल तो गया कम से कम 5 स्टार कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर। F2P अलहाइतम और F2P होता हो। सिद्धांत चोगले होता हो ले ले भाई, अलहाइतम को छोड़ दे, और नहीं तो येलन भी ले सकता है।
अलाइतम छोड़ दे। हाँ येलन यूनिवर्सल हर टीम में फिट हो जाती है। Body and mind. और अलाइतम की जगह हुता सबसे बेस्ट बोलूंगा भाई, वही ले लेना। अलाइतम के पीछे मत वेस्ट करना। अरे मैंने भी अभी शाव किया ना, देखना भाई मेरे को भी अभी शाव मिला है। पीछे तो अभी भाई 1 घंटे बाद अभी जस्ट मिला मेरे को शाव। दिखा दे ये देख, अब भी जस्ट मिला, 50 कर दिया। खाना खा के अबे 10-15 मिनट बाद जाने का बे, खाना खा के टहलने। तू खाना खा के जा रहा है ना टहलने? हाँ तो ठीक है। तेरे को इतनी ठंडी लग रही है, मेरे को कितनी लगती होगी? मतलब मेरे को इतनी लगती है इधर, तो तेरे को कितनी लगती होगी वो? तेरे को तो और जबरदस्त लगती होगी। चलो बाद में फार्म करेंगे। बस में किधर जाता था? कहाँ जाता था? अच्छा टेम्परेचर जाता था। कौन सा कैरेक्टर बचा हुआ है यार इधर? Just what will we come across this time? क्या? अरे मेरे से नहीं हो रहा भाई। कौन से कैरेक्टर से तूने किया था वैसे? कौन सा कैरेक्टर स्टॉप नहीं लेता हो बता, मैं My जाके family makes ornate umbrellas that block neither rain nor shine. Their हाँ, sole तू तो purpose यार is for वीडियो भी decoration upon a wall. देखिए से डायरेक्शन जा रहा है। अब आ गया ना अपना। हाँ नहीं पता है, अभी ट्राई कर लेंगे। रुक जाइए, बॉस मार लेने से जाता हूँ। बॉस मार के मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ थोड़ी देर। उसके बाद जाता हूँ, 10 बजे जाता हूँ मैं, फिर 10 बज भी गया। Rain outlines your fate. Know my sword. Witness the power of Guwa. This moment will be frozen in time. Propagate! बोल बच्चन ना। लैंटर्न राइड का फेस्टिवल वही है ना, बाकी वो क्वेस्ट करने का, और कुछ स्टोरी नहीं है ना? Rain outlines your fate. Know my sword. अच्छा रोज स्टोरी आती है रोज। अरे मुझे लगा एक साथ दे देना चाहिए, एक करके खोल। मिस प्रिमोजेमी से दे रहे बस। हाँ वो अभी तो खेल ही रहा था मैं।
कर लिया मैं लास्ट वाला 1 2 3 कर लिया, 4th बाकी है। अरे खाना खाने के टाइम अच्छा तू है, मुझे लगा वो आ गया, रैंडम का ही आ गया। बोला खाना खाने टाइम हमेशा आता है ये। दिख ही नहीं रहा है ना कितने दिन से, गायब ही है। लगता है गांड पे डंडे पड़े रहेंगे अरे दिन भर रात भर। अबे डीलोग भी चाहिए था, लेकिन है मेरे पास जीपीएस। मैं क्या करने वाला था मैं, ये मेरे पास ये है, चल ना फार्म करने का है। अरे उसके एक के वीडियो में देखा मैंने, बोलता है कि जो फ्रेजाइल रेजिन है वो ना बॉस फाइट में यूज करो ना, ये फार्म करने के लिए मत करो। हाँ तो फ्रेजाइल रेजिन मतलब, तो मतलब बॉस फाइट, बॉस से लड़ने के टाइम ना। चलो आजा, रेजर का 5 कंडेंसर रेजिन है, रेजर का यूज करते अपने। रेजर का नहीं नहीं, रेजर का मारने का, रेजर का आर्टिफैक्ट ये करने का। नहीं नहीं, रेजर का आर्टिफैक्ट चाहिए, आर्टिफैक्ट। हाँ डोमेन जा। I keep watch. You leave, you call me. हाँ कुछ तो है, अरे इधर ही था। इधर ही कहीं तो था, ये वाला रिच वॉच। कौन सा वाला है, ये वाला है कि ये वाला है? रिच वॉच है ना शायद। आपने को फिजिकल चाहिए ना, पेल पेल फ्लेम पेल वो वाला चाहिए ना, पेल क्या नाम है उसका? मतलब फिजिकल चाहिए तो इसी के अंदर ना। चाव के साथ कि अच्छा जोंगली तो चाहिए भाई, उसका यही है ना, यही वाला है ना। हाँ रुक गया। जियो बिशप है, 2 जियो बिशप आएंगे वो लोग को मारने। एक हीलर ले ले, एक हीलर ले ले तू, ठीक है। तो एक क्रायो, एक मैं, एक तो ये ले रहा हूँ, रेजर ले रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जिंगचो ले लूँ ना। अबे तू आ तो सही नहीं, पहले ऐड तो कर। साला अंदर ही नहीं दिखा। बरोबर है ना कैरेक्टर?
क्या ये लू कि नहीं? जिंगचो ले लूं या कचिंग ले लूं मैं? कचिंग का थोड़ा जल्दी जल्दी भरता है ना, लेकिन Ow! यानी Where did that come कचिंग बिल्ड from? नहीं है वैसे भी। अरे मेरा स्ट्रीम बंद हो गया, चल। नहीं नहीं, स्ट्रीम चालू है। पीसी 10 घंटे से ज्यादा चालू रहता है ना तो हक देता है।